Hi, good morning. My face has some, spots because कल मैंने कोई machine based treatment करी in a new clinic जिसका reference मुझे मेरे mother के कोई contact से मिला. I realized that I'm paying for my treatments. It's not as if I'm doing it free. But I have to understand the work ethics and medical practices that happen in such clinics. Because क्या होता है, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है वो डॉक्टर खुद कितना वो प्रिस्क्रिप्शन अपनी लाइफ में फॉलो करता है वो भी मैटर करता है. जैसे अगर संग्राम हेल्थ और फिटनेस के ऊपर बातचीत करे और संग्राम खुद बैठ के स्मोक और ड्रिंक करे, सो इट डज नॉट लीड टू एनी काइंड ऑफ इंस्पिरेशन. सो ट्रेनर जो आपको ट्रेन कर रहे हैं वो खुद फैट और अनफिट हो, देन ही इज नॉट एक्चुअली qualifying to be a trainer because his lifestyle is unhealthy. So I just wanted to kind of explore. So I did explore somebody. I took Sangram with me. I read the brochure. There was some machine-based treatment. But the thought process of the doctor also I wanted to understand. मैंने जब बोला है मेरा skin sensitive है, skin पतला है, you give advice for microderma abrasion, which is a very wrong advice because you do not exfoliate a skin which is sensitive, but you did give that advice which I refused. Then you gave an advice that आप एक RF machine based treatment करो for skin tightening and glow and everything. I read the brochure. I just thought, let me try it. As it is, I'm paying money. Let me try it. I'm with my husband. Let me understand the ethics and the thought process of the doctor. I tried it. So you can see there are all these dots. जो dots बने थे जब मैंने Morpheus किया था for my thighs. So it's formed on my face. Now this will go after a week, after 5 days. Because it's a goof up. You understand? I am not going to take the name of the doctor. I'm not going to give them that happiness. I am just going to tell my viewers and followers, अगर आपका स्किन सेंसिटिव है और आपको डॉक्टर बोल रहे हैं पॉलिशिंग करने के लिए, that's a red signal. But still, because you have already understood the work ethics of your earlier doctor since so many years, and you have to obviously decide now on new people, you will have to take the risk. But जब आप risk लोगे, you might face certain repercussions. जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में बोला था, your actions, your repercussions. तो अभी मैंने स्टेरॉइड या वो लगाया है फेस के ऊपर so that the spots and the scabs can fall off easily. But my clarity about analyzing the doctor has become clear. You understand? Because any doctor, whoever is associated with a hospital, is a different thought process. But a private clinic treatment and a private clinic assessment of your face is a different thought process. Hospital, yes, does not encourage a lot of cosmetic, dermatology and aesthetic physicians and stuff like that because they are into insurance and medical insurance does not support that. And when you go for cosmetic dermatology advice or aesthetic physician advice, it is usually payment from your own pocket. Yeah, so actors pay for their own treatment. Celebrities pay for their own treatment. Influencers दूसरी बात है कि रील बना लेते हैं, पोस्ट कर लेते हैं and उनको 1-2 बार ट्रीटमेंट फ्री मिल जाती है. एंड मैं ऑब्वियसली एक पाथ चूज कर रही हूँ जहाँ पर आई बिलीव फीडबैक तो मैं दे सकती हूँ. So I will give a feedback when I think I want to give the feedback because all my documentation is recorded. All my visits are recorded. But this is just for everybody to understand that a celebrity, when they give a feedback, you take their feedback also seriously. Because celebrities को misuse भी किया जाता है उनसे अच्छी अच्छी बातें बुलाकर. जैसे आप सेलिब्रिटी को यूज़ करते हैं बेटिंग एप्लीकेशन के लिए.
अच्छा अच्छा बोलो, उनको पैसे मिलते हैं अच्छा अच्छा बोलने के लिए, बट फीडबैक देने के लिए आपको पैसे नहीं मिलते. फीडबैक आपका खुद का एक्सपीरियंस है. हाँ, कभी आपका एक्सपीरियंस पर्टिकुलर इंसिडेंट रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज आप वो इंसिडेंट से इतने पर्टर्ब्ड हो गए कि एज अ सेलिब्रिटी यू हैड टू काइंड ऑफ डू समथिंग अबाउट इट, एंड यू आर नॉट अ एग्रेसिव पर्सन, अब्यूजिव पर्सन. You are a person who prefers to go through, you know, decent manner. So you give a feedback. But celebrities को पैसे दिए जाते हैं बोलने के लिए कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट बुरा है, बेटिंग एप्लीकेशन प्रमोट करने के लिए, अल्कोहल प्रमोट करने के लिए. सो एज सेलिब्रिटीज नाउ आई हैव रियलाइज्ड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू survive in this world of influencers, because usually we would not disclose our skin doctor, we would not disclose our hair, or we would not disclose our location. But जैसे मैंने आपको बोला, सेलिब्रिटीज दोनों सिचुएशन से फंस जाते हैं. जैसे एक सेलिब्रिटी कपिल शर्मा के बारे में न्यूज आई कि उनको थ्रेट के मिला, थ्रेट मिला, और उसके ऊपर मैंने बोला जी न्यूज पे, आई थिंक सम चैनल, एंड नाउ हिज मूवी अनाउंसमेंट हैज हैपेंड विद अब्बास मस्तान. So sometimes you really feel that are these celebrities actually filing false complaints, or this is a staged PR activity? Because बहुत बार बोला गया था कि महेश भट्ट जी ने अपने ऊपर गोलियां फायर करवाई because उनकी कोई फिल्म रिलीज हो रही थी. Lot of people said that, claimed that he did that. I am not claiming. So people are going to any level for publicity. You have to identify among media news which news you want to believe and which news you don't want to believe, which celebrity you want to believe, which celebrity you don't want to believe. Because देखो ऋतिक रोशन भी बेटिंग एप्लीकेशन प्रमोट कर रहा है ना. So आपको देखना है कि किसको आपको सपोर्ट कर रहा है. अक्षय कुमार ने, जब मैं वो लास्ट रियलिटी शो में थी, तंबाकू प्रमोट किया. शाहरुख, अजय देवगन, दे ऑल प्रमोट गुटखा एंड तंबाकू. Kapil Dev also did that. So these people are promoting bad habits and they are supposed to be icons. So for me right now, it's a very, very, delicate situation where I need to have control on my decisions. Because बहुत सारे लोग बोलेंगे पायल, पिक्चर में दिखी नहीं, शो में दिखी नहीं after lockup or whatever. So I have to maintain my opinion, my public appearance, my association, and my Google feedback and my social media as per my sensibility. Yeah? Okay, I'll talk to you guys later. Don't worry, ये ठीक हो जाएगा. But I'm very glad people expose themselves so fast. Do you understand? And now I will obviously put a filter on the video so that it's little, because I'm an actor. क्योंकि क्या होता है, हम शो करते हैं, जैसे मैंने लास्ट रियलिटी शो किया था, तो वहाँ पे मेरे फेस पे केमिकल्स वो लोग डालना चाहते थे होली पे या कोई फेस्टिवल पे, एंड आई वॉज ऑब्जेक्टिंग टू इट. गोबर, आई वॉज ऑब्जेक्टिंग टू इट बिकॉज मेरा फेस है, मुझे डर लग रहा था कि वो लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा, मुझे स्टेरॉइड लगाना पड़ेगा, मुझे नहीं लेना स्टेरॉइड, एंड आई वॉज वेरी हाइपर अबाउट इट. आई थिंक बाकी रियलिटी शोज में भी जो एक्टर्स होते हैं, दे गेट हाइपर उनके फेस पे अगर कुछ होता है या उनकी आंख में कुछ डाला जाता है. बट यहाँ पर एज अ स्किन ट्रीटमेंट ट्राई करने के लिए वी लेट दैट हैपन टू आवर फेस. सो यू हैव टू टेक दैट लिटिल बिट ऑफ रिस्क, बट एवरी टाइम इन लाइफ यू डोंट हैव टाइम टू डू दैट. यू अंडरस्टैंड? अभी तो मेरे पास डाउन टाइम के लिए टाइम है, because I'm not shooting something, I'm just talking to the camera. But if I was on the set and I had to put makeup on, I could not put makeup on because my downtime is so much. Do you understand? So when a doctor does not understand downtimes and does not understand the skin, then that doctor, even though associated with the hospital, जैसे वो अन्नामलाई डॉक्टर associated था अपोलो हॉस्पिटल से, but he was not understanding what is physiotherapy. He had opened a personal clinic. He was taking his clients from that hospital to his clinic, and Apollo hospital के नाम से clients आ रहे थे. And I was referred to him through a physiotherapist out here who was referred to me
through a eye doctor who was referred to me through my earlier skin doctor. So there was a chain of misleading. उसमें कौन intentional कर रहा था, unintentional कर रहा था, मुझे नहीं पता. It was a chain. You understand? A chain is created. So understand which doctor is good just for giving you medicine. Understand which doctor has sense of skin. Understand which doctor can do injectables. Understand which doctor even knows कि जो machines उसके clinic में रखी है वो machines का क्या use है, कौन से skin पे use है. This is for all those people who get misled by these skin clinics and skin institutes and cosmetic dermatologists and all that stuff. Yeah. Bye. Have a great day. Happy Republic Day.